सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके भाई, यहाँ तक कल देख लिया था ना कि यही वाली बात जो इनका कुरान सेंट्रिक वालों का कॉन्सेप्ट है कि सलात जो होती है वो बेसिकली ये सलात के सेशंस हैं, तबलीग के सेशंस हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आगे जो वीडियो है ना, काफी अभी है, तकरीबन आधे घंटे की रहती है। तो वो जो है मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे चलाती हूँ कि इनका कॉन्सेप्ट काफी हद तक समझ आ गया कि क्या कह रहे हैं, तो फिर हम औरों के भी कॉन्सेप्ट फिर ताकि देख सकें। ठीक है। Now, some have said that the Salah sessions were done during the Messenger's time because the people did not have the Quran with them. But now that we have the Quran with us, we no longer need to observe these Salah sessions. I completely disagree with this idea. In fact, my understanding from the Quran is that all believers must observe the Salah sessions, even after the death of the Messenger. Yes, in 11:14 it says uphold the following closely in the singular form, and in 1778 it says uphold the following closely also in the singular form, meaning that it's addressing the messenger. But there are verses in the Quran that address all believers, like in 24:58, where God talks about the privacy times involving revolving around Salatul Fajr and Salatul Isha. And it begins with the phrase, O you who believe. Since we are all believers, then this is addressing us. Likewise, in Surah 5, verse 6, where it says, O you who believe, if you get up to the Salah, then you shall wash your faces. Also addressing all the believers. And in Surah 4, verse 43 and 101, also addressing all the believers. So we cannot say that God does not want the believers to observe the Salah, because clearly God is telling all the believers to observe these Salah sessions. And in addition to 11:114 and 1778, where it's addressing the messenger in a singular form, understand that if God were to use the word prophet, then I would agree that that means that only the prophet during his time when he was alive, he was to uphold these Salah sessions. But because God is addressing in the singular form, it all equally applies to any reader reading the Quran. So, as far as I can understand from the Quran, these Salah sessions must be observed by all believers. अच्छा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ट्रांसलेट कर रही होती हूँ जो भी ये बता रहे होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि सलाद सेशंस जो होने थे, तबलीग के सेशंस, ये सलाद का जो वर्ड आया है ये सिर्फ प्रॉफिट के टाइम पर होने थे, क्योंकि उस वक्त कुरान इस तरह मौजूद नहीं था जैसे अभी हमारे हाथ में है ना, पूरा का पूरा नाजिल हुआ हुआ। तो इस तरह से नहीं था, तो इस वजह से ये उस टाइम के लिए था। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो ठीक है, दो जो वर्सेस है उसके अंदर सिंगल फॉर्म में है। जो उन्होंने कहा था ना कि वो जो जहाँ पे नमाज के वक्तों की बात आ रही है स्पेशली। अच्छा, उनकी जो दो, उनमें से जो दो आयात हैं उसके अंदर इस तरह है, लेकिन आगे के जो भी हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे वुजू वाली है कि जब तुम सब सलाद के लिए खड़े हो तो ऐसे वुजू कर लिया करो वाली जो है ना, ठीक है, वहां भी। और भी ये सारी इन्होंने बताई हुई है जिसके अंदर जमा कसी का यूज हुआ है कि सबने सलाद कायम करनी है। तो सिर्फ ये उस वक्त के लिए नहीं था, बात के लिए भी ये कह रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो इवन सिंगल वाले भी आ रहे होते हैं ना, सिंगल वाली आयात आ रही होती है जिसमें एक मुजक्कर को, जैसे तुम एक मुजक्कर को करके मुखातिब किया जा रहा होता है, तो उसमें भी कह रहे हैं कि अगर क्लियरली मेंशन नहीं है नबी का वर्ड या ऐसे कुछ, तो एक मुजक्कर के लिए भी अगर कोई बात हो रही होती है तो वो फिर सबके लिए ही अप्लाई, सबके लिए ऊपर ही एप्लीकेबल होती है, अनटिल अनलेस वहां पे कोई खास तौर पे मेंशन हो। ये वो चीज है जो कि मुझे इनकी बातों से समझ आ रही है, मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। और कोई भी चीज में अगर गलत करी हो तो अल्लाह ताला मुझे माफ करे, आप लोग खुद अपने तौर पे भी इन वीडियोस को देख लिया करें। अच्छा, उसके अलावा ये कि इनकी बात मुझे बहुत ज्यादा ये अच्छी लगी है, जो मैंने पहले या तो नोट नहीं की या इन्होंने कही नहीं, कि पिछले 2 मिनट की जो मैंने वीडियो अभी प्ले की है उसके अंदर 2 दफा इन्होंने वाली बात की है कि माई अंडर अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान, कि मैं जिस तरह कुरान समझाऊं। फिर उसके ही शायद चंद सेकंड्स के बाद इन्होंने दोबारा वाली बात की है, कुछ जुमला तो मुझे याद नहीं, लेकिन यही कि मैं इसको इस तरह समझाऊं। ठीक है, ये मुझे इतनी प्यारी अप्रोच लगती है ना, इतनी प्यारी और इतनी सेफ अप्रोच भी रखती है कि बंदा जब भी किसी को बता रहा हो वो जरूर ये मेंशन करे कि यार मैं कुरान से ये समझी हूँ। ठीक है, जहाँ पे ये वाला एटीट्यूड हमारा होता है ना कि कुरान में ये आया है, ठीक है भाई, बहुत 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 डेंजरस बात मुझे लगती है जब हम इस तरह कहते हैं कि कुरान में तो ये है, ठीक है, अल्लाह ताला ने तो ये कहा है।
ठीक है, अब ये देखिए सारी चीजें अरबी में है, इसमें हमें गलती हो सकती है, तो बंदा जरूर बताए, कुरान को कोट करे सब कुछ, लेकिन हम फिर भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और हमारी क्या मतलब हम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं जहां भी जो उलमा ने फरमाया होता है या जो ट्रांसलेशन में आया होता है, हम फिर भी अरबी को उस तरह नहीं, तो सेफ अप्रोच ये है कि भाई कुरान में जो आया है वो वाली फला आयत है, उसके अंदर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो मुझे लगता है कि कुरान में ये है। ठीक है, तो उसमें ना हमारी बहुत ज्यादा बचत है, इंस्टेड ऑफ दिस कि हम ये बोलें कि कुरान में ये आया है करके ना, कॉन्फिडेंटली जैसे हम कहते हैं, तो ये मुझे लगता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इन्होंने 2 दफा पिछले कोई 2 मिनट में ये वाली बात बोली है कि मैं इसको इस तरह समझाऊं। ठीक है, अच्छा भाई आगे चलते हैं। So to conclude, upholding the Salah, Quranically speaking, is to follow God's laws closely, and it is to observe these Salah sessions that are mentioned in the Quran. And this is all that Salah means according to the Quran. ये मैं क्या सही है, थोड़ा फास्ट चलाऊंगी वीडियो, ठीक है। अरे चलो भाई। Another thing that is noteworthy to mention is that the word salah in the Quran is actually a general term because there are different types of salah. What we have seen so far is the salah from human to God, and we can see this, for example, in Surah 87, verse 15, where it says, "And he remembered the name of his Lord, and thus he followed closely." So this is a salah that's from human to God. Additionally, like in Surah 9, verse 5, where it talks about the polytheists upholding the salah. And this does not mean that they are to observe a ritual prayer or to become Muslims, but simply based on the context, it indicates that the polytheists who were violating the peace treaty, they were supposed to uphold the Salah in the sense of abiding by the laws or the rules that are laid out in the Quran. एक मिनट क्या है जरा चेक करूँ। 9-5। ठीक है, अभी तक ये कह रहे हैं सलात एक जनरल टर्म है, जैसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। सही है, यही समझ आया मुझे जो ये कह रहे हैं। तो उसमें है ह्यूमन से गॉड की तरफ, मतलब हम पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला को। ठीक है। अच्छा, अब जो इसमें 9:5 ये वाला जो था, जल्दी से चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। बस जब हराम महीने गुजर जाए तब शकीन को कत्ल करो, जहां पाओ और गिरो और हर गांव में उनकी खबर लेने के लिए बैठा। फिर अगर वो तौबा कर लें, अगर वो तौबा कर लें व अकामुस सलात। ठीक है, फिर अगर ये तौबा कर लें, एक सेकंड। अच्छा, मुशरिकीन की बात हो रही है, सही है। और अकामुस सलात कर लें और आता वो जक़ात कर लें। ठीक है, तो वखल्लू सबीला हो, तो उन्हें छोड़ दो। तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें, इसको ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस चैनल कि अकाम सलात के लिए मतलब अल्लाह ताला के जो लॉज है उसको फॉलो करने लगे। ठीक है, तो फिर जो है उनको छोड़ दो वाली चीज। Abiding by the laws or the rules that are laid out in the Quran. Another type of salah is the salah that's from God to the human being. And we can see this in Surah 33 verse 56 where it says, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi." God and his angels follow closely onto the prophet. And all that this means, it indicates that God and the angels are supporting the prophet. And the third type of salah is from the human to human. And we can see this in the second part of the phrase where it says, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O you who believe, you shall follow closely onto him, indicating that there is a salah between the human beings. All these indicate that there is a support, some type of support that is from God to the human as well as from human to human. अच्छा, ये वाली जो आयत है ना कि अल्लाह ताला और फरिश्ते युसल्लूना करते हैं नबी पर। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से सलात ह्यूमन को, हमने तो भी ह्यूमन की तरफ से अल्लाह ताला को देखी थी ना सारा कॉन्सेप्ट जो पिछली 30 मिनट्स में देखा। अब क्या है, अल्लाह की तरफ से सलात ह्यूमन बीइंग को, जैसे अल्लाह नबी को आ रहा है, नबी ह्यूमन से ना। ठीक है, तो उसमें कह रहे हैं कि ये सपोर्ट यानी अल्लाह ताला की तरफ से सपोर्ट नबी को है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, सही है। और फिर आगे आ रहा है कि ए वो लोग या अय्युहल्लज़ीना, हाँ ए वो लोगो जो ईमान लाए हो,
तुम सल्लू करो अलैहि, उस पर, नबी पर। ठीक है, तो अब ह्यूमन ह्यूमन को सलात कर रहा है। सही है, ये वाला भी एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं शायद के, तो ये येट अगेन कह रहे हैं कि इससे ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन ह्यूमन को सपोर्ट जो कर रहा होता है उसको, उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है सलात की। अब इसमें ये वाली बात ये कर तो रहे, ठीक है, अभी हम रूट लेटर्स वगैरह नहीं देख रहे, लेकिन ये कि कुछ इसके अंदर चक्कर मे बी रूट लेटर्स का हो। स्वाद लाम वाव है, स्वाद लाम या है, क्या चक्कर था। खैर चले फिलहाल अंडरस्टैंड कर देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और बाकी क्या कह रहे हैं, हम तो भाई सबका भी देख रहे हैं ना। ठीक है भाई, आगे चलते Report that is from God to the human as well as from human to human. So what all of this indicates is that the word salah is actually an umbrella term, meaning that based on the context that we are reading, the different types of salah can be applied. And we can see this in Surah 2 verse 238, where God says, Hafidhu ala as-salawat. Guard the following closely. Salawat in the plural form. Salawat here is plural, meaning three or more. And then God says, was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin, and the following closely. Salah in the singular form, that is the most balanced. The reason why God is using as was salatul wusta here is plural, meaning three or more. And then God says was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin, and the following closely. Salah in the singular form, that is the most balanced. The reason why God is using the word salawat in the plural form in the first part is not because of the ritual prayers, but simply referring to the three or more different types of salah in the Quran. God wants us to guard these different types of salah. And then he wants us to be balanced with these salahs. The word wusta in Arabic means balanced. Some have said it means the middle, which is also applicable. However, wusta in the Quran indicates something that is fair, balanced, or just, like in Surah 5 verse 89 and 68:28. ठीक है, सवालाबाद का वर्ड आया है तो कम से कम तो तीन होंगी ना, क्योंकि मुसन्ना से ज्यादा का है। ठीक है, तो मतलब जमा का सीगा है, तो इस वजह से कह रहे हैं कि कम से कम तीन, और फिर उसके अलावा और भी जो सलात का जिक्र आया। और ये सलातुल वुस्ता का जो ये कह रहे हैं कि वैसे कहा जाता है कि मिडिल प्लेयर, प्लेयर कह रहे हैं मिडिल प्रेयर। ठीक है, और जो है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वुस्ता का वर्ड कुरान बैलेंस्ड के उसमें लेता है, तो कह रहे हैं मिडिल प्लेयर का कॉन्सेप्ट भी इस आयत को समझने के लिए वर्क कर जाएगा, और बैलेंस्ड का। ठीक है, एंड द सलात दैट इज द मोस्ट बैलेंस्ड, सलातुल वुस्ता, मतलब हाफिजू करना है एक तो अल सलावात को व सलातुल वुस्ता को, दैट इज द मोस्ट बैलेंस्ड। ओके, सही है भाई, देखते हैं आगे। बाकी उन्होंने रेफरेंस दिए हुए हैं ये वुस्ता टर्मिनोलॉजी को, अगर कुरान से दूसरी जगह से समझना है तो। Surah 5 verse 89 and 68:28. So now I'd like to talk about the notion of the three different movements that we are supposed to do in the salah: standing, bowing, prostration, or qawama, raka'a, sajada. As noted earlier, there is no instruction on how to observe a ritual salah in the Quran. The words qawama, raka'a, sajada are never found together with the term salah, and all three of these terms are scattered throughout the Quran. So in other words, we do not find any form of instruction or methodology on how to observe the ritual prayer that we know of today. Instead, we do see these three terms scattered throughout the Quran, but not in a coherent fashion in the sense of a ritual. So let's address each of these terms. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जहां जहां ये सलात का वर्ड आता है ना कुरान में, ठीक है, तो वहां पर ये वाले जो आते हैं ना, कयाम, सजदा, रुकू, नहीं, कयाम, रुकू, सजदा, ठीक है, तो वो सलात के साथ नहीं आ रहा होता। शुरू में तो उन्होंने ये वाली बात की, ठीक है, सलात के साथ जहां जहां, जैसे यहाँ पर है मिसाल के तौर पे अकामुस सलात, ठीक है, अब इधर सजदा, रुकू और कयाम का नहीं आ रहा होता, जितना मुझे समझ आया कह रहे हैं। ठीक है, तो और उसके अलावा
उसके अलावा क्या कह रहे हैं कि और ये पूरे कुरान में स्कैटर मतलब आए हुए तो हैं ये सारी चीजें, लेकिन अलग अलग जगह पे स्कैटर, जैसे कि इन्होंने शुरू में कहा था कि अगर हम ये सारी चीजों को मिलाते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा एक आम इंसान के लिए कि सारी इतनी सारी आयत को जमा करके फिर एक, जैसे कि मुफ्ती कामरान शहजाद हैं और बहुत सारे हैं जिन्होंने जो निकालते हैं कि नमाज जो हमारा तरीका है नमाज का वो ही कुरान के अंदर मौजूद है। फिर वो सजदे की आयत अलग से निकालते हैं, रुकू की अलग से, कयाम की अलग से, और फिर उसको सबको कम फिर मुफ्ती कामरान शहजाद जैसे वो भी निकालते हैं ना कि अल्लाह अकबर कहना भी जो हम नमाज के शुरू में कहते हैं ये भी कुरान से साबित है। तो ये सब अलग अलग जगह से इन सब ने जमा की हुई है। तो उस पे कहते हैं कि मतलब बहुत मुश्किल लगता है कि अल्लाह ताला हमसे ये एक्सपेक्ट करे एक आम, क्योंकि जाहिर सी बात है सबने इतना हाई लेवल कुरान नहीं समझ पाना कि वो अलग अलग जगह से उठा के फिर एक नमाज के तरीके को वो मतलब कि कंबाइन करके और फिर समझें कि ये नमाज का तरीका अल्लाह ताला एक्सपेक्ट कर रहे थे हमसे कि हम नमाज इस तरह पढ़ें। ठीक है, अगर हम कुरान से ही नमाज निकालने की बात कर रहे हैं तो उस पे कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फैली हुई है ये वाली आयत इधर उधर ना, तो उनको जमा करना, तो ये वाली बात इन्होंने बहुत शुरू में वीडियो की गई थी कि ऐसा लगता नहीं कि इसको नमाज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो फिर देखते हैं फिर ये क्या है। अभी आगे है कि ये बताएंगे कि अगर ये सब नमाज में नहीं करना है सजदा और ये सारी चीजें, तो फिर ये क्या क्या है, मेरे ख्याल से ये बताएंगे। ठीक है। so that we can get clarity as to what is God talking about in regards to these terms. So let's begin with the root word qawama, where words like aqim comes from. Qawama, based on the root definition, means to set something aright and maintaining it. There is no doubt that in the Arabic language, qawama can mean to stand up, like in Surah 3 verse 191, but it could also mean to set something aright like a wall, like in 1877. And it could also signify keeping after someone or something, like in 375. But when it comes to the salah, aqimu as-salah simply means to uphold. अच्छा, पहले उन्होंने क्या सलात की ये निकाले जो अकीम का वर्ड आता है। ठीक है, एक तो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग, जो हमारा स्टैंडिंग वाला स्टैंडिंग खड़ा होना होता है, एक उस तरह भी आया है यहाँ पे स्टैंडिंग के मीनिंग में। एक आया है कि इसको किसी चीज को सही करना। ठीक है। देन दे फाउंड अ वॉल विच वाज क्लोज टू कोलैप्सिंग, सो ही सेट इट राइट। ठीक है, गिरने वाली थी दीवार तो उसको उन्होंने सही किया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है कि एक और मीनिंग में ये आ रहा है कि unless you keep after, uh, there are those whom if you entrust with one gold coin he will not return it to you unless you keep after, आई गेस मुसलसल, जैसे उन्होंने भी ये बात बोली थी कि एक तो सेट इट राइट करना एक चीज है, फिर उसको मेंटेन करना। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने किसी चीज में अपने आप को अपनी इस्लाह कर ली। ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर आगे उस चीज को मेंटेन किया, कंटिन्यू करवाया, ये उन्होंने शुरू में कहा था, तो शायद तीसरा वाला मे बी उसी के उसमें हो। ठीक है, तो ये वाले मीनिंग्स कह रहे हैं, ये एक तो आ रहे हैं अकीम का वर्ड जब आ रहा है। ठीक है, अब इसको सलात या कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे कि जब आ रहा है तो क्या लगता है। एक मिनट। Also mean to set something aright like a wall, like in 1877. And it could also signify keeping after someone or something, like in 375. But when it comes to the salah, aqimu as-salah simply means to uphold the salah. We are setting the salah aright and maintaining it. It is just like the phrase aqimu ad-din, uphold the deen, uphold the system. It is just like the phrase aqamu at-Torah, they upheld the Torah. And it also has the same significance as wa'aqimu al-wazna, and uphold the weight. So aqimu as-salah simply means to uphold the salah because we are setting it aright and maintaining it. It has nothing to do with standing up. So when we look at this and reflect on Surah 3 verse 38 through 39, ठीक है, तो अकीम सलात का जैसे हमारे जन में आता है ना कि नमाज के लिए खड़े हो जाओ इस तरह करके, तो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग वाली चीज नहीं हो रही होती जब अकीम सलात आता है, क्योंकि अकीमू का वर्ड और भी जगह पर आया है, दीन को कायम करो, वो अकीमू करो। ठीक है, सिस्टम को, तौरात को अकीमू करो, इसमें आ रहा है अकामू। वो क्यों आ रहा है, रूट तो सेम है, सी में हाथ से वाप बदल रहा है। फिर नीचे अकीमू वजन को, अब ये पता नहीं कहाँ पर है, एंड अपहोल्ड द वेट कुरान में कहीं पे 555। तो ये कह रहे हैं कि ये फिर इससे इन सब चीजों साबित हो रहा है कि ये सिर्फ स्टैंडिंग वाली चीज नहीं होती जब हकीम सलात के बाद। ठीक है, ये तो मेरे हाल से हम पहले भी मिल। a lot of people are using this passage to say, see, Zechariah was actually standing up during his salah.
It's possible that he was standing up, but it could also mean that he was simply upholding the prayer that is mentioned here. In verse 38, it says, "It was then that Zechariah implored his Lord. He said, 'My Lord, grant me from you a good progeny. You are the hearer of prayers.'" So the angels called him while he was upholding, following closely. He was upholding the prayer that he was saying in the previous verse. This is all that aqamu or qa'imun means. So upholding, aqim simply means to uphold something. तो जो हजरत जकरिया वाली आयत है ना कि वो जब क़ाइमुन की हालत में थे तो फरिश्ते ने आके उन्हें खुशखबरी दी, तो कह रहे हैं कि वो हो भी सकता है खड़े हों, हो भी सकता है वो सिर्फ कायम कर रहे हो सलात सेशन को। ठीक है, जो इनका कॉन्सेप्ट। Aqim simply means to uphold something. The next term we'd like to look at is rak'ah, where words like irka'u comes from. Rak'ah, based on its root definition, means to be non-resistant and yielding. This is why in Lisan al-Arab it says the man has rak'ah if he becomes poor after being rich and his situation worsens. So the man who was rich then becomes poor, goes through rak'ah. He becomes non-resistant and yielding to his poor situation. Even a ground that gives and there's a hole in the ground, it's called rak'ah because the ground itself became non-resistant and yielding. In Surah 5, verse 55, it talks about the believers, how they uphold the salah and give the zakah while they are raki'un, while they are yielding. It doesn't make sense that they are upholding the salah and giving the zakah while they are bowing. It simply doesn't make sense from a ritual salah perspective. It refers to being yielding to the situation. They uphold the salah, give the zakah while they are yielding. And this is why in Surah 3, verse 42 through 43, God is talking to Mary. He says, "O Mary, God has selected you and cleansed you, and he has selected you over all the women of the worlds. O Mary, be dutiful to your Lord and submit and yield with those who are yielding." It doesn't make sense that Mary is to simply bow. It's referring to Mary yielding to the said information about her. God has selected you and cleansed you, so she has to yield to these commandments. This is all that rak'ah means from a Quranic perspective. तो ये यील्डिंग का वर्ड इतना यूज करा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या यील्डिंग। एक मिनट में सर्च मारो। एक तो आ रहा है यील्डिंग का झुकने वाला, नरम पड़ने वाला, रास्ता देना, पैदावार देना, देने वाला, नतीजा देने वाला, मान जाने वाला, रजामंद हो जाने वाला। क्या कह रहे हैं? यील्डिंग एंड नॉन, मतलब वो ओ मैरी बी ब्यूटीफुल टू योर लॉर्ड एंड सबमिट एंड यील्ड विद दोज हु आर यील्डिंग। ठीक है। पहली बात तो वो वाकई वो बड़ी सरप्राइजिंग थी जो कहते हैं कि नमाज कायम करो और ज़कात दो। वो जो था ना इस हाल में कि तुम रुकू कर रहे हो, तो वो कि बंदा रुकू करते हुए ज़कात कैसे दे सकता है। ठीक है। ये वाली एक चीज मैंने कभी पहले नोट नहीं की। ठीक है, एक तो वो वाली बात उन्होंने वो वाली आयत दिखाई थी इससे पहले, और अभी जो ये कह रहे हैं कि ये रुकू का मतलब होता है यील्डिंग एंड नॉन रेजिस्ट। क्या पे दोबारा एक मिनट रुके जरा। They are raki'un, while they are yielding. It doesn't make sense that they are upholding the salah and giving the zakah while they are bowing. It simply doesn't make sense from a ritual salah perspective. It refers to being yielding to the situation. They uphold the salah, give the zakah while they are yielding. And this is why in Surah 3, verse 42 through 43, God is talking to Mary. He says, "O Mary, God has selected you and cleansed you, and he has selected you over all the women of the worlds. O Mary, be dutiful to your Lord and submit and yield with those who are yielding." It doesn't make sense that Mary is to simply bow. It's referring to Mary yielding to the said information about her. God has selected you and cleansed you, so she has to yield to these commandments. This is all that rak'ah means from a Quran. ठीक है। मतलब हील्ड टू अल्लाहस कमांड जिस तरह करके कह रहे हैं ना कि मतलब कि नॉन रेजिस्टेंट तो ये होता है ना कि जैसे बात को मान लेना। ठीक है, कि आप एक तो रेजिस्टेंट हो रहे, कोई आपको हुक्म दिया कि अब आप नहीं मान रहे हो। ठीक है, तो और नॉन रेजिस्टेंस कि आप इजीली उस बात को मान रहे हो।
ठीक है, इस तरह से करके। और यील्ड वैसे तो प्रोड्यूस को कहते हैं। ठीक है, आसानी से बात मान लेना। तो ऐसे ही लग रहा है कि अल्लाह के जो कमांड्स है उनको आप मानो, इस तरह करके। ठीक है, दोबारा वीडियो प्ले करने पे यही लगा। Quranic perspective. And of course the last term sajada, where words like usjudu comes from. Sajada, based on the root definition, means to obey and submit to the commandments given. Lisan al-Arab confirms this. It says anyone who humbles and submits to what he was commanded to do, then he has sajada. And we can see this in the Quran in 16:48 through 50. It says, have they not seen what God has created of a thing? Its shadows incline to the right and left in submission to God, and they are humbled. So God talks about how the shadow submits or does sujud to God. And then it says, and to God yesjudu submits all those in the heavens and all those on earth, from the creatures and the angels, and they are not arrogant. They fear their Lord from above them, and they do what they are commanded to do. So based on this passage, sujud simply means obeying what you are commanded to do. That is all that sujud means. And we can put this into perspective. Like in 96:19, it says, no, do not obey him, submit and come near. In Surah 7, verse 161 through 162, it says, reside in this town and eat from it as you please and enter the gate submitting, sujadan. It does not mean in prostration. It simply means in submission. In 25:64, those who dwell for their Lord in submission, sujadan, and staying up. In 84:21 through 22, and when the Quran is read over them, they do not submit, yasjudun. One can, if they want to, put prostration here, but there is no significance to prostrating here. Instead, it is the submission that signifies you obeying the commandments given. ठीक है, तो अब ये वाले जो सुजदन और सब चीज आ रही है, ये कह रहे हैं कि ज्यादातर आयात में इस तरह से लग रहा है। मैं सारी आयात खोल नहीं रही ना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बाद में भी, अभी तो और वीडियोस देखेंगे ना बहुत सारी इंशाल्लाह, तो वहां पे भी वाली आयात आएंगी डेफिनेटली, तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये कि ये सजदा जो वो प्रोस्ट्रेट करने वाला सजदा नहीं लग रहा इनको। ये कह रहे हैं कि जैसे था ना हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाइयों को, उसके नहीं, उनके भाइयों को नहीं, नहीं, बनी इसराइल को मिला था ना कि हाँ, सुजदन की हालत में एंटर होना वहां पे, तो कह रहे हैं सजदा करते हुए एंटर होना लग नहीं रहा। और भी जितनी ये दूसरी आयत इन्होंने दी है ना, ठीक है, तो इसमें लग रहा है कि बात को मानना, ओबे करना। सही, ये मैं खोलती हूँ जरा, ये जो कह रहे हैं। और हाँ, ये वाली बात भी कि जितने भी वो है ना कहीं पे कि सितारे हैं और पेड़ हैं, इस तरह वो सजदा कर रहे हैं अल्लाह ताला को, इस तरह तो ताकि बात मान रहे हैं अल्लाह ताला की, ओबे कर रहे हैं, इस तरह करके कुछ ये बातें बता रहे हैं। मैं बिल्कुल, मैं रिवाइंड करके दोबारा सुन के दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हम थोड़ा स्पीड में चला रहे हैं इस वीडियो को ना, इसलिए अभी नहीं खोल रही हूँ आयात। ये देखते हैं 96-19 जरा, मुझे हो रहा है एक मिनट। If any one of you wants to join these sessions, then ये सुबह सुबह 5 बजे हो रहे होते हैं, ठीक है, तो आ सकते हैं जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। जवाई 96-19। कल्ला ला तुतीअहु वस्जुद वक्तरिब, हरगिज नहीं, उसके पीछे क्या बात हो रही है। वो बुला ले अपने हामियों की टोली को, हम भी अजाब के फरिश्तों को बुला लेंगे। हरगिज नहीं, उसकी बात ना मानो और सजदा करो और कुर्ब हासिल करो। उसकी बात ना मानो और सजदा करो और कुर्ब हासिल करो। Another key point to keep in mind is that sujud in the Quran cannot refer to physical prostration if we read these verses carefully. Like in 234, it says, submit to Adam, usjudu li Adam. It doesn't say submit towards Adam or usjudu ila Adam. If God was referring to a physical prostration, he would have said usjudu ila Adam. Ila means towards Adam. But it says submit to Adam, li Adam. The same applies in 726. And to him they submit. Walahu yasjudun. Yasjuduna lishams, submitting to the sun, not towards the sun.
I saw them submitting to me. رأيتهم لي ساجدين. Will they not submit to God? ألا يسجدوا لله. So it's not towards God, it's to God. So the idea of sujud having anything to do with prostration that holds no water in the Quran. Instead, sujud in the Quran simply means to submit to the commandments as given in Surah 16, verse 48 through 50. अच्छा, भी कह रहे हैं कि ये जितने भी उस जो डूअर्स तरह से आ रहे हैं ना, ये इला के साथ अगर आते हैं, इला सिले के साथ, तो फिर हो जाता है कि फिजिकली सजदा करना किसी को, ठीक है। और जब ये लाम के साथ आता है, यसजुदूना लिशमसी और इस तरह से, तो ये के उसकी बात मानो, ठीक है, ओबे करो। तो उसजुदूली आदमा, आदम अलैहिस्सलाम की बात मानो, इस तरह से कर रहे हैं। So now that we understand what salah is from the Quran, as well as what rak'ah, sajada, and qawama mean, let's begin addressing the often quoted verses where the word salah is used, as well as qawama, rak'ah, or sajada. Let's begin with Surah 2, verse 124 and 125, where it talks about Abraham and how he was tested by words from his Lord, and he fulfilled them. He said, I will make you a leader for the people. So God wanted to make Abraham an exemplary leader for the people. And then Abraham said, and also for my progeny, he said, my pleasure will not encompass the wicked. And we have made the sanctuary to be a return refuge for the people. So Abraham was to build this sanctuary as a safe refuge for the people. And then it says, and you shall take from the status of Abraham a place for following closely. Note here the word maqam in Arabic. Maqam unfortunately has been misunderstood, mistranslated, and abused as to signify somewhere where Abraham actually physically stood, supposedly. This is a place where Abraham supposedly stood in Mecca. Those are his footprints, supposedly, and that's where people actually observe the ritual prayer. Again, this is incorrect. Maqam in the Quran signifies a status, not a physical place in which you stand. You can refer to these verses to verify this. So God is saying, you shall take from the status of Abraham a place for following closely. Musalla. The word musalla here is not a ritual prayer. You can see this in 1437 where it also talks about the musalla of Abraham. The musalla of Abraham is we are to take from his status a following closely. Devotion, reverence, leading a life dedicated to God alone. And then it says, and we covenanted unto Abraham and Ishmael, you shall purify my sanctuary for those who visit, those who are staying, and the yielding and the submitting. They are yielding and submitting. They're not bowing and prostrating. They're yielding and submitting to the following closely, to the laws that are laid out for them. This sanctuary is welcomed by travelers, anyone staying, and those who are yield and submit to the rules of God. This is all that this passage is talking about. It's not talking about some ritual prayer where you're supposed to try to bow and prostrate to where Abraham once stood. It doesn't make sense from the Quran. अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जो मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना वाली आयत है, उसमें कह रहे हैं मकाम का वर्ड कुरान से समझा जाए तो अ, वो है कि वो उर्दू वाला मकाम ही लग रहा है मुझे। कह रहे हैं कि उसको एक मुकाम मिला है, उसको एक स्टेटस मिला है, जो हम कहते हैं ना, ठीक है। तो ये स्टेटस जो था इब्राहिम अलैहि सलाम का, उसको मुसल्ला बनाओ कि वो जैसे करते थे, उनकी अल्लाह ताला के लिए डेडिकेट करके लाइफ को गुजारना, और उनका जो तरीका था इब्राहिम सलाम का, ठीक है, उसको अडॉप्ट करने वाली बात हो रही है, मुसल्ला बनाने वाली बात हो रही है, बजाय इसके कि नमाज की बात हो रही है यहाँ पे, वो जो हमारी वाली नमाज होती है, ठीक है। अच्छा, और जो मैं या तो पहले गलत समझी, जो इन्होंने ये वाली बात बोली थी ना कि सलात की आयत के आसपास सजदे और रुकू वगैरह की आयत, सलात की वर्ड जब यूज होता है तो नहीं हो, लेकिन इसमें तो हो रहा है ना, मुसल्ला बनाओ, और इसी आयत में कह रहे हैं आगे रुकू और सजदे का जिक्र है। मैं कुछ गलत समझी होंगी, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। It's simply talking about the sanctuary that Abraham built, and it's devoted to God alone, and it is for those who yield and submit to the rules of God. The next verse we'd like to look at is Surah 48, verse 29, where it says, Muhammad is the messenger of God, and those who are with him are severe against the disbelievers, but merciful between themselves. You see them yielding, submitting. They seek the blessings and approval of God.
Let me ask here, is bowing and prostrating going to be a benefit to seek the blessings and approval of God? The answer is no. It is by yielding and submitting to his rules that brings us the blessings and approval of God. Additionally, it says their distinction is in their faces as a result of submitting. And unfortunately, this phrase has been misused where people would actually bang their heads on the floor to try to get this distinction on their faces. This is not what God is saying. It says in their faces, not on their faces. So the distinction is in their faces, not on their faces, signifies that they are submitting to the rules of God. The result of sujood creates awe, reverence, and absolute submission in the face of the believers. This is all that the verse is. The next verse is Surah 2, verse 238, where God says, guard the following closely, salawat, and the following closely that is the most balanced, and maintain dutiful to God. We see here in the first part of the phrase, God says salawat in the plural form, and people say, oh, this is referring to the ritual prayers. This is incorrect. If we just simply read the passage in context, we see that in the previous passage, God is speaking of family, marriage, and divorce laws. And all that the salawat is referring to is that we are to follow these different types of rules laid out in that passage. Then God says, and the following closely that is the most balanced, as-salatul wusta. The most balanced is to be fair, just, and equitable in the laws that are mentioned in this passage. That is all that this verse is mentioning. It's not referring to the ritual prayers or anything of that sort. It just seems very random for it to actually be speaking about it when it's in the midst of family, marriage, and divorce laws. Instead, the salah here is referring to following closely to the laws laid out for them. अच्छा, अब ये जो पैसेज है ना सूरह बकरा का 221 से 237 तक, इसमें कह रहे हैं फैमिली लॉज, मैरिज लॉज, डिवोर्स लॉज, ये सारे इसमें डिस्कस हुए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये वाली आयत आ रही है कि जो है हाफिजुल सलावात करके, तो इससे जो है वो कह रहे हैं और ज्यादा क्लियर हो रहा है कि ये जितने भी लॉज अल्लाह ताला ने ऊपर बयान किए इनको फॉलो करना सलात है। ठीक है। वैसे तो सलाद सेशंस कह रहे थे जो वीडियो के शुरू में कि सलाद सेशंस कायम करना सलात है, लेकिन हाँ ये भी कह रहे थे ना साथ साथ कि उन लॉज को फॉलो करना जो अल्लाह ताला ने बयान किया। ठीक है, अच्छा, 6 मिनट की वीडियो The रहेगा। next verse I would like to talk about is Surah 4, verse 102, where this is actually one of the most commonly quoted verses to justify the idea of a ritual salah. But if we read this verse very carefully, we will see that it defies the typical ritual salah that we know of today. Let's assume that the sajadu here is referring to prostration, and let's follow what it says exactly. In verse 102, it says, and if you are with them, the you here is singular, are with them, and you, still singular, uphold a salah for them. Then let a group from among them stand with you, and let them bring their weapons. So put this into perspective. We have the leader of the group, and there is a group behind him bringing their weapons. Let a group from among them stand with you, and let them bring their weapons. And when they have sajadu, they have sajadu. It doesn't say when you all have done prostration. It means when they have sajadu, they have done the prostration, excluding the leader. And let them be behind you. The you here is plural. What happened? There's just the sudden shift of the you from singular to you to plural. And when they have sajadu, they have prostrated, not including the messenger or the leader of the group. So this defies the typical ritual salah. It does not include the leader of the group. This is if we follow the actual wording of this verse. Instead, let me show you what I understand from this verse. So as noted earlier, this passage is talking about war. And more specifically, it's talking about how to uphold the salah sessions during war. The word sajadu does not mean prostration, it means to submit to the rules given during the salah sessions. And it says, let them be behind you. The Arabic word behind you is wara'akum, and it means to be in a situation or position where the other person cannot see you. Here I rendered it as covering you, and we can see an example of this in these verses. So let's put this into perspective again. And if you are with them and you uphold the salah for them, then let
a group from among them stand with you and let them bring their weapons. So we have a group of soldiers here, and we have the leader in the center, for example. A group from among them will come to him with their weapons, hear the words of God, they will submit to them, then they will leave, and another group will come and listen and hear the words of God. When they have sajadu submitted to the rules, then let them be behind you. Go back into the positions where they are covering the other persons. This is all that this verse is referring to. It's not talking about how to observe the ritual salah. It is talking about how to uphold the salah sessions during war. अच्छा, अब ये वही जो कल जंग वाली बात हो रही थी, तो इसमें था कि जंग के दौरान सलात सेशंस कैसे कायम करें। तो वही उन्होंने बताया कि पहले कुछ लोग आए, वो जो लीडर है उसके पास आए, और फिर आके जो भी कुरान का सेशन है वो लें। ठीक है, बात अगेन वही लग रही है कि जंग के दौरान कैसे ले सकते हैं ये, लेकिन खैर ये कह रहे हैं फिर उसके अलावा फिर वो जो पहला ग्रुप था वो चला जाए, फिर दूसरा ग्रुप आए और वो आके और उनके साथ ये सलात सेशन ले। So the Salah sessions during war are done in a simple rotational manner. One group will come, listen to the message of God, submit, leave, and another group will come instead of them and do the same thing. And this is why in the next verse it says in 103, then if you are secure, then uphold the Salah. Indeed, the Salah for the believers is a book that is scheduled. So the Salah sessions equals specific gatherings to listen and heed the messages of God. And if you read beyond this passage, 105 to 113, we will see this. And of course, last but not least is Surah 17, verse 107, where it says, those who have been given the knowledge before it, when it is recited to them, they fall to their chins, submitting, sujadan. Note that in this phrase, the word salah does not occur, so we can no way justify the idea or the notion that we are supposed to fall to our chins during salah. Additionally, look at this phrase, they fall to their chins submitting. In Arabic, it says, يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. I have a few observations for this phrase. It says they fall to their chins, not they fall onto their chins. And it also says they fall to their chins, not they fall prostrating to their chins. And if sujud here is referring to physical prostration, then it would be redundant to say fall and prostrate in the same phrase. It would be redundant to say that because the prostration itself is the falling. It would have sufficed to say if, for example, it would have said they fall to their chins, that would have been enough. Or they prostrate to their chins would have also been suffice. But instead, God says they fall to their chins submitting, sujadan. The word sujadan, if we pay attention in the next, in 109, it says, and they fall to their chins, again using the same expression, crying, and increases them in humility. So the part of the sujud here is that they fall to their chins crying, and it increases them in humility. The sujud increases them in humility by submitting to what has been said or what is being recited onto them. It increases their humility. So this passage has nothing to do with physical prostration, but simple submitting to the rules of God. इसमें कह रहे हैं दे फॉल टू देयर चिन्स, और फिर आगे आ रहा है सबमिटिंग, सुजदन। सुजदन की तो हालत खुद ही होती है जिसके अंदर बंदा गिरता है, आगे ना। तो कह रहे फॉल का वर्ड भी आ रहा है, फिर सुजदन भी आ रहा है, दो दो दफा फॉल एक तरह से ना। तो उसमें कह रहे हैं कि इसलिए लग रहा है कि फिर ये सुजदन जो है ये फिजिकल वाला गिरना सजदे में जाकर वो नहीं है। ठीक है, ये बात को मानना ओबे करना वाली चीज है। और नीचे अगली आयत में भी कह रहे हैं दे फॉल टू देयर चिन्स आ रहा है। तो इसको इसलिए इनको लग रहा है कि ये वो सजदे वाला फॉल करना नहीं है। अच्छा, और कह रहे हैं और फिर वो ऑन टू और टू वाली चीज। चलिए बस आगे चलते हैं। So to sum up everything that we have learned, the idea or the notion of a salah being a ritual prayer cannot be found in the Quran. Instead, what we have learned is that the word salah means following closely. And according to the Quran, the salah is following God's laws closely, as well as upholding the salah sessions as ordained in the Quran. We also learned that the word rak'ah means yielding to the rules of God, and sajda means submitting to the rules of God. And this is all that salah means based on my research from the Quran and based on my understanding.
It is also in my personal opinion that if a person chooses to do physical movements, then that is entirely up to them as a personal preference. But as far as the Quran is concerned, these physical movements have nothing to do with salah. Assalamu alaikum, and inshallah see you next video. ठीक है, ये वाली चीजें बता रहे हैं। और ये कि अगर कोई अपने तौर पर करता है तो वो ठीक है, लेकिन कुरान में कह रहे हैं कि नमाज का ये वाला तरीका नहीं दिखता। अच्छा, सबमिटिंग एंड यील्डिंग ये कह रहे हैं ना, यील्डिंग टू अल्लाह's कमांड, सबमिटिंग टू अल्लाह's कमांड में क्या फर्क है? चैट जीपीटी बारीक सा फर्क है, कह रहे हैं। अल्लाह के हुक्म के सामने खुद को सुपुर्द करना सबमिट हो गया। यील्डिंग अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाना, अपनी मुजामत या अड़ अड़ या अकड़ खत्म कर देना और छोड़ने का पहलू, हुक्म मान लेना, इसमें ज्यादा नुमाया है। ठीक हो गया। ओके, कल किसी और की रिसर्च देखते हैं ये सलात फ्रॉम कुरान के ऊपर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।